So, today we are going to study laws governing social media and cyber laws. Now, democracy and freedom of speech and expression, if we talk about, तो डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र का बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है या बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. Like there have been internationally, or I can say that at the international level also, there have been incidents जहाँ पे attempt किया गया है freedom of speech and expression को खत्म करने का या कम करने का. तो ग्लोबली जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको उसका वो रिड्यूस हो गया है लाइक व्हाट इट वाज बिफोर. Now, internet and freedom of speech and expression. Here we're going to talk about like internet shutdowns जो होते हैं उनके बारे में बात की गई है कि freedom of speech and expression का essential part है internet because we can express ourselves through social media. और अगर इंटरनेट ही बंद कर दिया जाता है तो उस केस में राइट टू इंफॉर्मेशन जो है that is a tool to restrict excessive freedom of speech and expression. Like you can get information, what is happening, what is not happening. Accountability create करता है. Now grounds of restriction freedom of speech and expression, like कोई भी ऐसी चीज बोलना जो sovereignty and integrity of India के against हो, decency, morality, contempt of court. तो ये सब जो है restrictions हैं कि that a person is restricted कि भाई आपका freedom of speech and expression कुछ grounds पे restrictions दिए हैं. Now if we talk about social media and its regulation. Regulation means to control. Like types of social media में there are various platforms हैं. YouTube, video making platform, then Twitter, now X and Instagram. तो यहाँ पे भी जो भी अपलोड होती हैं चीज़ें तो उनके बारे में. Now hate speech is when कोई ऐसा कोई वीडियो डाल दे जिससे कोई वायलेंस क्रिएट हो तो उसको भी रेगुलेट करना ज़रूरी है बिकॉज then it will affect public order. Censorship is like to cut or to um, to remove certain pictures or to certain videos, certain things कि भाई इसको essential नहीं है और वो कुछ ऐसा है which should not be shown because it might create violence or it is against the ethos or the ethics. Now, regulation of social media can be by self-regulation or state regulation. Self-regulation is when social media giants या social media groups से अपने खुद के standards बनाए. So that उसका advantage ये होता है कि there is no interference या कि भाई कि ये दिखाना है या ये नहीं दिखाना, तो वो खुद ही अपने standards set कर सकते हैं. And the concept of state regulation is when state makes some law for governing it or it gives certain guidelines to control social media. Now, the important aspect or the importance of social media is to create awareness. Then media trial. Media trial is when कि जो मीडिया ही सारी चीज़ें करने लगे ना तो उसका वायलेशन होता है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो होता है तो उसका उस राइट का वायलेशन होता है बिकॉज मीडिया में ही जजमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है विदाउट नोइंग एनीथिंग. और उससे का ये भी एक डिसएडवांटेज है कि वो जज के माइंड में पहले ही एक इम्प्रेशन क्रिएट कर देते हैं लाइक व्हाट द पब्लिक इज थिंकिंग, व्हाट इज the angle of public. So that is not
Correct. Media trial is not right. Now, this case law, Anuradha Bhasin versus Union of India, this is a landmark case, and this is relating to internet shutdowns, like Jammu and Kashmir might happen. So, it was held that internet shutdown should be very proportional and it should not be excessive. कि बहुत टाइम तक चल ही रहा है बिकॉज इंटरनेट के बहुत सारे यूजेस हैं और सबका राइट है उसको एक्सेस करने का. Next comes cyber laws and social media. Like, what are the acts or what are the laws that govern social media? So there's Information Technology Act. There's like it. Then there's DPDP law, Digital Personal Data Protection Act. ये भी recently आया है. Then there are bodies like MeitY, Ministry of Electronics and Information Technology, PIB. फैक्ट चेक यूनिट्स होते हैं जो चेक करते हैं कि भाई क्या कंटेंट है. और ट्राई इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये सब बॉडीज हैं जो इन पे चेक रखती हैं. नाउ कमिंग ऑन टू साइबर क्राइम. तो साइबर क्राइम इज समथिंग विच इज सोशली डेंजरस एक्ट which is committed using computer equipment. Then there are types of cyber crime जैसे malware attacks हो सकते हैं. Phishing is जब कोई बार बार मैसेजेस भेज रहे हैं थ्रू ईमेल और थ्रू एनीथिंग और आपकी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कोई क्रेडिट कार्ड नंबर्स एक्सेट्रा. आइडेंटिटी थेफ्ट इज आल्सो अबाउट portraying like someone else या impersonating someone else ऐसा. फिर साइबर स्टॉकिंग बुलिंग तो इज एक मैसेजिंग ऑन सम पोस्ट और किसी को बुली करना. देन हैकिंग और डेटा थेफ्ट ये सारे टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स. देन वी हैव दीज इन्वेस्टिगेशन सेल्स एंड फॉरेंसिक लेबोरेटरीज जो डिजिटल एविडेंस के बारे में है और जो उनको देखती हैं, कलेक्ट करती हैं, चेक करती हैं दैट वेदर इट इज वैलिड, उसकी वैलिडिटी को देखती है. सो अदर लॉज जो हैं वो ये BNS, IT rules and cyber security.